Good morning, everyone. Myself, Madhu Gautam. I am student of MSc Medical Biotechnology first year, and the topic of my presentation is sequence alignment. But before we start, first we know what is alignment. Alignment is to place one sequence over another in such a fashion as to get a maximal similarities between the sequences are known as alignment. Alignment can be done in two ways, that is sequence alignment, and another is structural alignment. Structural alignment attempts to establish homology between two or more polymer structures based on their shape and their 3D conformation. Sequence alignment. A sequence alignment is a way of arranging the sequence of DNA, RNA, or proteins to identify regions of similarity that may be a consequences of functional, structural, or evolutionary relationship between the sequences. It is an important first step towards structural and functional analysis of newly determined sequences. As new biological sequences are being generated at exponential rate, sequences comparison is becoming increasingly important to draw functional and evolutionary inferences. सीक्वेंस अलाइनमेंट हम या तो एक नोन सीक्वेंस और एक अननोन सीक्वेंस के बीच करते हैं या फिर दो अननोन सीक्वेंसेस के बीच में करते हैं. जो नोन सीक्वेंसेस होती है उन्हें हम रेफरेंस सीक्वेंस कहते हैं, जो अननोन सीक्वेंस होती है उन्हें हम क्वेरी सीक्वेंस कहते हैं. Before we move ahead, we first know some terms. That is similarity. Refers to the percentage of aligned residues that have similar physiochemical characteristics and can more readily substitute for each other. Identity, the extent to which two sequences, that is nucleotide sequences or amino acid sequences, are invariant. Optimal alignment, an alignment of these two sequences with the highest possible score is called optimal alignment. Query, the input sequences which is compared to all the entries in the database is called query sequence. Sequence identity refers to the percentage of matches of the same amino acids residues between two aligned sequences. Homologous. Homologous refers to the conclusion drawn from the data that the two genes or sequence have descent from a common ancestor. Homologous sequences are of two types, that is orthologous or paralogous. Homologous sequences in different species that arose from a common ancestor gene during a speciation is called orthologous, or paralogous are those homologous sequences within a single species that arose by a gene duplication. Differences between similarity and homology. Similarity refers to the likeliness or the percent identity between two sequences, or homology refers to the shared ancestry. Similarity means sharing a statistical significant number of bases or amino acids. Two sequences are homologous if they are derived from a common ancestors sequence. A similarity does not imply to homology, but homology usually implies similarity. Sequence similarity can be quantified using percentages, but homology is a qualitative quantity. Three zones of protein sequence alignments are: two proteins in a sequence can be regarded as homologous if the percentage sequence identity falls in the safe zone, that is the identity percent is of 30% or higher. Sequence identity value below the safe zone boundary but above 20% are considered to be twilight zone, where the homologous relationships are less certain. The reason below 20% is the midnight zone, where homologous relationship cannot be reliably determined. This is safe zone, where the identity percent is 30% or higher. This is twilight zone, that is more than 20%
per less than 30%. Midnight zone, that is less than 20%. Types of sequence alignment. Sequence alignment is of two types: global alignment and local alignment. Global alignment is alignment program based on Needleman-Wunsch algorithm. In global alignment, two sequences to be aligned and are assumed to be generally similar over their entire length. Alignment is carried out from beginning to the end of the sequences to find the best possible alignment across the entire length of the two sequences. Input given to the global alignment is treat the two sequences as potentially equivalent. Goal is to identify conserved region and differences of the two sequences. Application of global alignment are comparing two genes with same function, comparing two proteins with the similar function. Local alignment. Local alignment programs is based on Smith-Waterman. Local alignment, on the other hand, does not assume that two sequences in questions have similarity over the entire length. If it only finds local regions with the highest level of similarity between the two sequences and aligns these regions without regard of the alignment of the rest of the sequences regions. The three primary methods of producing pairwise alignment are dot matrix method, dynamic programming method, and the word methods. Input given to the local alignment is that two sequences may or may not be related. Goal is to see whether a substring in one sequence aligns well with the substring or the other sequence. Applications of local alignments are searching for local similarities in large sequences, example newly sequenced genomes, or looking for or conserved domain or motifs in two proteins. Pairwise sequence alignment. Pairwise sequence alignment methods are used to find the best matching piecewise pairwise alignment of two query sequences. Pairwise alignment can only be used between two sequences at a time. The three primary methods of producing pairwise alignments are dot matrix method. It is an old method. The dynamic programming method algorithm is an advanced method, and word or k-tuple method. Dot matrix analysis. A dot matrix analysis is a grid system where the similar nucleotides of two DNA sequences are represented as dots. It is also called dot plot. It is a pairwise sequence alignment made in the computer. In dot matrix, nucleotide of one sequence are written from the left to right on the top row, and those of the other sequence are written from the top to bottom on the left side of the column of the matrix. That is ऐसे जैसे एक सीक्वेंस हमने लेफ्ट टू राइट लिखा अपर रो के ऊपर और एक हमने लिखा along the column ऐसे. At every point where the two nucleotides are the same, a dot in the intersection of row and column becomes dark dot, like this. Here G and G are same nucleotides, then there is a dark. Here C and C, then here is also a dark black dot, like this. When all these darkened dots are connected, it gives a graph called dot plot. The line found in the dot plot is called reoccurrence plot. Each dot in the plot represents a matching nucleotide or amino acid. Dot matrix method is qualitative and simple to analyze sequences. However, it takes much time to analyze large sequences.
Dot matrix method is useful for following studies, that is sequence similarity between two nucleotide sequences or two amino acid sequences, insertion of short stretches in DNA or amino acid sequences, deletion or short stretches from a deletion of short stretches from a DNA or amino acid sequence, or repeat or inserted repeats in a DNA or amino acid sequences. Dynamic programming method. It was introduced by Richard Bellman in 1940. The word programming here denotes the finding an acceptable plan of action and not the computer programming. It is useful in aligning nucleotide sequence of DNA and amino acid sequences of protein coded by that DNA. Global alignment program is based on Needleman-Wunsch algorithm and local alignment on Smith-Waterman. Both algorithms are derivates from the basic dynamic program algorithm. We now study the dynamic programming method through an example. We have to align these two sequences, that is sequence 1 is GAA-TT-CA-GTT-A and the other sequence is GGA-TCGA. M is equal to 11 and N is equal to 7. Here M and N represent the length of the sequence 1 and 2 respectively. A simple scoring scheme is assumed where Sij is equal to 1 if the residue at position I of sequence 1 is same as the residue at position of J of sequence 2, that is match score. Sij is equal to 0 if it is mismatch, or if W, that is gap penalty, is also 0. 3 steps in dynamic programming are initialization, matrix fill, that is scoring method, or another is traceback align, and this is final alignment formation. Initialization step, the first step in global alignment dynamic programming approach is to create a matrix with m plus 1 columns and n plus 1 rows where m and n are corresponds to the size of the sequences to be aligned, and the matrix first and initially will be filled with 0 like this. Two sequences are written here and here, and initially matrix is filled with zeros. Now we fill the matrix with the values, appropriate values. One possible solution of the matrix fill step is to find the maximum global alignment score by starting in the upper left hand corner in the matrix and finding the maximal score of each position in the matrix. हमें हर बॉक्स के लिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ऐसे ही हमें सारे बॉक्सेस फिल करते जाने हैं. उसके लिए इन बॉक्सेस को फिल करने के कुछ रूल्स हैं. उसके लिए हम ये 4 बॉक्स कंसीडर करते हैं पहले. जैसा कि ये रे वो 4 बॉक्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने स्कोर स्कीम रखी थी. 1 हम मैच स्कोर देते थे, 0 मिसमैच के लिए और 0 हमारी गैप पेनल्टी थी. वैसे ही अगर हम लोगों ने इनिशियली इन 3 बॉक्सेस में 0-0 पुट किया था, अब इस बॉक्स की वैल्यू हमें पता करनी है, इसका मैक्सिमम स्कोर हमें पता करना है. तो उसके लिए हमें रूल्स क्या है, अगर हम डायगोनल बॉक्स से लेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, उस बॉक्स की वैल्यू प्लस अगर वो मैच कर रहा है तो मैच स्कोर, दैट इज 0 प्लस 0, दैट इज 0 प्लस 1, ये हमें वैल्यू मिलेगी जो कि हमारा 1 बना. अगर डायगोनली लेकिन वो मिसमैच है तो उसका क्या होगा, 0
प्लस 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हमारा हमने एग्जांपल लिया है कि हमारा स्टार्टिंग में वो मैच कर रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे G और G है, इन दोनों सीक्वेंस में यहाँ भी G है और यहाँ भी G है, तो हमारा ये मैच कर रहा है, इसलिए हमने लिया है 0 प्लस 1। तो ये स्कोर हो गया इसका 1। लेकिन हम साइड वाले बॉक्स से अगर हम वैल्यू लेंगे तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, साइड वाले बॉक्स की वैल्यू प्लस गैप पेनल्टी। गैप पेनल्टी हमारी स्कोर स्कीम के हिसाब से 0 है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई 0। और बॉटम बॉक्स की उससे लेंगे, उसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला है, 0 प्लस गैप पेनल्टी दैट इज 0। तो वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमें इस बॉक्स का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, मैक्सिमम ग्लोबल अलाइनमेंट का स्कोर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज में से 1 0 0 में से जो सबसे मैक्सिमम होगी वैल्यू उसे लेंगे। जैसे कि 1 है तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1। ऐसे ही हमें पूरे बॉक्सेस की वैल्यू लेनी है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम अभी इन 4 बॉक्सेस को कंसीडर करते हैं। इसमें अगर हमने डायगोनली लिया तो ये देखो ये मिसमैच है, तो हम क्या करेंगे, और मिसमैच के लिए हमारे स्कोर स्कीम में क्या था, 0 प्लस 0, क्योंकि मिसमैच के लिए हम कोई स्कोर नहीं देते, हम 0 देते हैं। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो एक डायगोनली इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन अगर हम बॉटम वाले स्कोर से लेंगे तो हमारा क्या था फॉर्मूला, इस बॉक्स की वैल्यू प्लस पेनल्टी वैल्यू, गैप पेनल्टी वैल्यू। तो उसका ये क्या था, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। और थर्ड वैल्यू क्या है, बिसाइड बॉक्स से, उसका भी सेम फॉर्मूला था, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो वहां पे अब इन तीनों वैल्यूज में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो ये आ गई 1। ऐसे ही हमें सारे बॉक्सेस फिल करते जाने हैं। उसके बाद हमें ट्रेस बैक स्टेप लेना है। ट्रेस बैक स्टेप क्या है, स्टेप्स डिटरमाइंस द एक्चुअल अलाइनमेंट दैट रिजल्ट इन द मैक्सिमम स्कोर। ट्रेस बैक स्टेप्स के लिए हम पहले इस वैल्यू को लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट सुटेबल वैल्यू है, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स स्कोर बॉक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे मोस्ट सुटेबल वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेस बैक के लिए हमें पीछे जाते जाना है बार हर स्टेप के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 6 पे गए, उसके बाद हमें डायगोनली ऊपर जाना है, और उसके बाद लेकिन ट्रेस बैक का एक रूल है अलाइनमेंट सेट करने के लिए। अलाइनमेंट सेट करने का रूल क्या है कि पहले हमें ट्रेस अगर हमारा जो एरो है ट्रेस बैक में वो परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हुआ तो हमें उसमें गैप देना उस अलाइनमेंट में। लेकिन अगर हमारा एरो डायगोनली है तो वहां पे हमें वो कैरेक्टर लिखना है। अगर मानो ए है तो ए लिखना है, बी लिखना है तो टी लिखना है तो टी, ऐसे। ट्रेस बैक जाते वक्त क्या करेंगे, हम इस 6 से डायगोनली 5 तक जाएंगे क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू है। लेकिन इसमें हमें हॉरिजॉन्टली जाना पड़ रहा है क्योंकि ये इस वैल्यू से आई है हाईएस्ट वैल्यू, और ये इस वैल्यू से। उसके बाद हम डायगोनली फिर जाएंगे, फिर 4, फिर 3 और फिर 2
फिर 2, फिर 2, फिर 1 और फिर 1। ऐसे कर करके हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पर 6 था और हमारा हॉरिजॉन्टली जा रहा था, क्योंकि ओ तो फिर ए और ए की अलाइनमेंट हो, हमने कैरेक्टर्स लिख दिए। लेकिन हमारा उसके बाद वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हमारा एरो गया, तो इसलिए हमने वहां पे एक गैप छोड़ दिया। हमारा दोबारा हॉरिजॉन्टली गया एरो, इसके लिए हमने दोबारा एक गैप डाल दिया। उसके बाद हमारा डायगनली गया, तो ये जी और ये जी सेम है, तो इनके बीच में अलाइनमेंट हो गई। यहाँ हम इसमें सीक्वेंस 1 ऊपर ले रहे हैं, तो हम जिस तरफ एरो होता है हम वो कैरेक्टर्स नहीं लिखते हैं, उधर हम लोग गैप डालेंगे, लेकिन ऊपर वाले को लिखेंगे। तो जैसे इनमें हमने गैप डाला था, तो ए के बाद हमने गैप डाला, लेकिन ये टी और टी लिखे जाएंगे। ऐसे हम एक अलाइनमेंट फॉर्म कर लेंगे। ये होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड। और नेक्स्ट मेथड है वर्ड मेथड और के ट्यूपल मेथड। It is used to find an optimal alignment solution, but it is more than dynamic programming. This method is useful in large-scale database searches to find whether there is significant match available with the query sequences. Word method is used in database search tools such as FASTA and BLAST family, and they identify a series of short, non-overlapping subsequences of the query sequences. These are the methods of pairwise alignment. Thank you.